Dorante pini bangke class 11 exercise 3.2 la cheng phita 3.1 ke tangalo matide. So class 11 3.2 3.2 lalo. Question number 1 to 5 and kilo. Find the value of other 5 trigonometric function in exercise 1.5. De 1.5 sorry 1 to 5 ba 1 to 5 pute 1 to 5 ano isi bang nang pilo la isi bang nang pilo. Question number 1 cos x equal to minus 1 by 2 x light in third quadrant de third quadrant lo anke solution given cos x equal to minus 1 by 2 but we know sin square theta plus cos square theta equal to 1 de okay theta plus or equal to 1 minus cos square theta plus to formula ke class 10 on do mate de class 10 on that follow mate de ke non log sin pang final po sin cos x la hai hai final po cos bang la hello ita min non sin bang third quadrant no value kon mala final po so we know sin square theta plus cos square theta equal to 1 so sin square equal to la cos theta bang pu padam jilo ate 1 minus cos square theta sin square theta equal to 1 minus cos square theta mate de cos value kan cos x ke x mate de x le use such out x okay sorry x lo de daga so 1 minus cos x ke minus 1 by 2 square ate cos square x mate de ase cos x ho 1 by 2 te square ko mate de so equal to 1 minus so here minus 1 by 2 into minus 1 by 2 the compo minus into minus plus 1 1 to 1 2 2 ja 4 so plus into minus the plus 1 bandi plus into minus pute minus ke 1 by 4 fraction claim pini mate deduct of 1 dolo ke LCM and that kalo 4 1 ja 4 minus 1 1 ja 1 1 4 ja 4 sin square dr x de x sin square x equal to 3 by 4 lo mate de ote last root cancel po sin x as root padam ji pate pan lo root 3 po mate de by 2 square so square dolo pate square banai long ke la so square pen so square than pelote sin x equal to plus minus root 3 by 2 okay okay next ke konalo lang nahi ke last formula important nai la ho question number pini ke x light in third quadrant material third quadrant sin x ke minus so therefore x equal to minus root 3 by 2 sin x light in third quadrant
third quadrant mati laksi minus and plus minus mati de engke jongsi dak jongsi plus purote dak plus value n po de jongsi plus purote dak plus n po nongge minus penang mati de laksi la en lo ke next ke number ke next ke cos long elo cos 10 find po 10x equal to sin x by cos x. So 10x equal to sin x का value कौन लो sin x value के minus root 3 by 2 इनके कौन लो cos x के minus 1 by 2 मत दे 10x equal to minus root 3 by 2 into divide पर into बनाए चला अंतों पर रूम अंग पर minus 2 by 1 उल्टा भाग बोला हम लाभांग उल्टा फिट पर 10x equal to minus root 3 by 2 इनके लड़ा के डिवाइड सिन मत दे हम मल्टीप्लाई लो बोलते उल्टा फिट बोला हम ऐसे minus 2 by 1 लड़ा के 1 by 2 मत दे so 10x equal to minus multiply फिर चलो दा root minus into minus plus root 3 into 2 root 3 by 2 1 get 2 10x equal to 2 cancel the root 3 plus minus root 3 okay next के 10 दे 10 के third quadrant लोग के plus जो therefore 10x equal to root 3 sin x lies in third quadrant बोले देला इनके तीन टा लोग एलो cos दुईटा कि फाइनल 5 मत दे एकटा दुईटा लोग एलो नॉन कि थम दोला the next के cot x equal to 1 by 10x बोलते cot equal to 1 by root 3 मत दे 10x का वैल्यू नाम yang dalam peklang ko 10x का वैल्यू को root 3 मत दे लालो okay 10x so ane lo di so cot x plus minus बोलते cot x third के quadrant के plus दे cot x equal to third quadrant नालो ला हेलो मत दे हो बोलते plus so therefore cot x equal to 1 by root 3 sin x lies in third quadrant बोलते full tong nang to इनके next के cot long alo तीन long don के sec x equal to 1 by cos x okay sec x equal to 1 by cos x का वैल्यू का minus 1 by 2 दे minus 1 by 2 जगह minus 1 by 2 लो मत दे तो minus 1 by 2 minus 1 by 2 okay sec x equal to 1 into minus 2 by 1 ला डिवाइड पे मत दे ला डिनोमिनेटर वैल्यू के मल्टीप्लाई अंशों 1 लो बोलते मल्टीप्लाई पर minus 1 by 2 पर मत दे उल्टा फिट पर तो sec x equal to 2 1 get 2 minus plus into minus 2 by 1 so yeah sec x equal to minus 2 plus minus 2 okay therefore sec x के सोलो sec के minus मत दे equal to minus 2 sin x lies in third quadrant
engke non sarita long non last ke copy dolang sin 10 cos long tinta engke la cosec dolang cosec x equal to 1 by sin x de hote cosec 1 by sin x ke 1 sin x का वैल्यू कौन लो sin x का वैल्यू के minus root 3 by 2 minus root 3 by 2 होते हैं क्या लाता ला पुलो multiply लो होते लास्ट ऑप्शन पर multiply लो टांग सोंग उल्टा फिट बोला था आंग सोंग पर बारूम टांग पारूम पर बाय 2 by root 3 होते minus इनके 1 into minus 1 into minus 2 by root 3 mati di root minus 2 by root 3 plus minus root 3 by 2 therefore cosec x equal to kalau cosec pil pin long bang lo cosec lah yang mati di minus so equal to minus 2 by root 3 sin x lies in third quadrant there ane lo mati di answer check na 3.2 jo sin x equal to minus root 3 by 2 sin x equal to minus root 3 by 2 cholo mati di and get 10x के plus root 3 चलो दे इनके next cot के 1 by root 3 अने cot plus लो मजी लाते चलो मजी दे इनके sec a plus sec a minus 2 लो मजी दे ला minus 2 लो के इनके next cosec से कौन लो minus 2 by root 3 jadi akan minus 2 by root 3 coba bu answer ke oksi buji jalang pote mo nanga juta me nearly nang ke thani fan ke chitik ding lo next question number 2 sin x number 2 ke pilo sin x equal to 3 by 5x lies in second quadrant lo mati de sin x equal to direct solution tok fit po solution sin x equal to 3 by 5 de 3 by 5 lo inke next first ki find ke pamoteng lo we know sin square x plus cos square x equal to 1 pote cos dage sin a value ki duta ready cos bang pubi poso cos square x equal to 1 minus sin square x normally de the next ke cos square x equal to 1 minus sin square x value kan lo 3 by 5 square inge cos square x equal to 1 by 3 square equal to 3 and 9 de 5 5 25 lalu mari de inke taking LCM penilo bulote dak 1 dobte 25 1 25 minus 9 1 9 inke 1 into 25 so 25 minus 9 kon po 25 minus 9 kon po 16 by 25 de 16 by 25 pute cos square x equal to 4 4 16 5 5 25 lo mati de square lo mati de square cancel po cos x equal to plus minus 4 by 5 lo mati de 4 by 5 इनके plus minus इनके second quadrant में होंगे दे therefore cos x equal to
cos x equal to quadrant này lang lấy được sin ta có cái gì bằng mà mình chưa đâu cos x second quadrant के minus में दिया minus second quadrant है second cos x second quadrant के minus में दिया là minus बटे डाक के minus 4/5 sin x light in second quadrant deh alam tu bang lah aja basics long pele anda cakap lah so pini bang yang ke next ke an ke bang buji lama buji jelang pote mola comment long bang le naga juno ni naga reply pani ready ding lah deh yang ke next ke cos tang lo sin cos 10 bang po ayat value le an ma prang chok ki joy keling so 10x equal to sin x by cos x उते कौन लो sin x का वैल्यू कौन लो sin x का वैल्यू के 3/5 में दे 3/5 then cos x का वैल्यू के -4/5 लालो में दे उते 3/5 लास्ट तो सिन पर बंग के मल्टीप्लाई कौन वालो उते लबंग उल्टा भाग पर 5/4 तो माइनस दोला 3 5 15 minus 15 by 4 5 20 20 में दे 10x equal to cancel मिलांगे दी हो 5 3 या 15 5 4 20 so minus plus minus 3/4 therefore 10x equal to Gela x 10 के कोपिया long si puridon lo 10 के puridon के second minus so yeah minus 3/4 sin x light in second quadrant lalu mari deh inke next cot change fit पर cot बोलते cot x equal to 1/10x नंबर दे तो cot x equal to 1/10x वैल्यू कर लो minus 3/4 अतः cot x equal to 1 into अतः उल्टा फिट पर multiply लो मत दे अतः 4/3 अतः cot x equal to 1 into plus into minus 1 4/3 तो cot x कौन पर cot की कॉपी लोग पूरी डन पर cot का पूरी डन टा माइनस है तो माइनस लगे प्लस माइनस पर cot x equal to -4/3 ला फर्स्ट बंगे प्लस माइनस प्लस तो दे चलो क्या therefore cot x equal to -4/3 x light in second quadrant deh next kita long tang pasta pen ke ekta duita tinta non duita dola ipilo second pen ni logo sec x pen cosec x equal to 1/sin x मतलब दे पर sin x का वैल्यू कौन लो sin x का वैल्यू चिल्लाइन सुना sin x का वैल्यू के 3/5 दे 3/5 पटे cosec x equal to minus अथवा 1/3/5 मतलब दे equal to 1 into लटा multiply कौन वालों बोलते उल्टा फिर पर 5/3 equal to 5/3 5 1 5 3 लो मत दे plus minus cosec therefore cosec x equal to plus or minus लो क्या
cosec के second quadrant होंगे plus 5 by 3 5 by 3 x lie in second quadrant दे बुझी लो plus sin x value होदा पेनी first long pen n लो 1 by 3 so multiply लो 1 into 5 5 3 के लो 3 लो इनके plus minus भी लो के क्लास so table long pen lang लो cos x मत दी cos x and second quadrant के positive मत जों से डक negative पर negative value ले अन so cos x equal to 5 5 by 3 positive दे next case sec x equal to 1 by cos theta मत दी है basic knowledge मत kalau cos x minus 4 by 5 mati di so 1 by minus 4 by 5 latala pulo 1 nasto pot multiply convert pote 5 by 4 minus 5 by 4 po minus 5 by 4 1 5 5 4 ke 4 lo plus minus of 6 di therefore 6x equal to लगे second third quadrant long के और second quadrant long के x के minus दे so minus 5 by 4 sin x lies in second quadrant lalu mati di second quadrant now next question next chalo mati di answer check tu na 3.2 cos x के cos x के 3 by 5 चलो cos x के minus 4 by 5 चलो sec x के minus x के minus 5 by 4 चलो tan x के minus 3 by 4 cot x के minus 4 by 3 चलो next question number 3 question number 3 question number 3 के cot x equal to 3 by 4 x lie in third quadrant the solution given cot x equal to 3 by 4 now cot x pute cot pen ulta ke pilo 10 pumati di so tan x equal to 1 by 3 by 4 pute 1 into pulote la ulta fit po 4 by 3 so tan x equal to plus minus 4 by 3 so therefore tan x equal to pilo third quadrant mate di third quadrant pulote third quadrant 10 के positive मत दी so tan is equal to 4 by 3 sin x lies in third quadrant दे the next 10 long alo non get 10 pente cos x cosec x halo de cosec x putote ke following ko pulong ke cosec x ke number 1 तो next cosec x के
रोमन नंबर 2 cosec x के cosec square x minus cot x cot square x equal to 1 दे formula लगे basic formula class 10 formula इनका cosec square x equal to 1 plus cot square x होने दिला 2 पॉइंट डेट लोगों negative change to positive so 1 plus cot value kan lo cot value के 3 by 4 मत दे 3 by 4 3 by 4 square cosec square x the 1 plus 3 to 9 for 16 for 16 1 just 16 then the one only 1 9 just 9 plus 9 by 16 1 just 16 they gone for 16 plus 9 gone for 25 by 6 or sorry 16 cosec square x now cosec square x equal to 5 by 4 square बना देते हैं गन 5 square के 25 लो to 4 square के 16 बने रहे so square cancel दे cos square cosec जी cosec x equal to 5 by 4 plus minus 5 by 4 therefore cosec x equal to कौन cosec के थर्ड क्वाड्रेंट में हम रेडी cosec के थर्ड क्वाड्रेंट के माइनस क्वेश्चन lang pami dila third quadrant minus lo 5 by 4 sin x light in third quadrant एक दो तीन नेक्स्ट क्या tan long lo cosec long lo cot long lo non के cosec long de sin x होते sin x equal to 1 by cosec x दे 1 by cosec x होते sin x equal to 1 by cos x value के minus 5 by 4 होते 1 into उल्टा फिट पर minus 4 by 5 plus minus sin x therefore sin x थर्ड क्वाड्रेंट का sin x के माइनस मत दे तो here minus 4 by 5 x light in third quadrant number 4 Roman number 4 के tan long lo cos x long lo sin long lo cos or sec find for s is sec square or sec x put there sec x formula basic formula is sec square x minus tan square x equal to 1 basic formula lo class 10 follow ta okay simplify sec square x equal to 1 plus tan square x equal to 1 plus tan square value को 10 value को लो 10 value के 4 by 3
square there. Then next we simplify sec x square there. Sec square x equal to 1 plus 16. 4 square plus 16 lo, then 3 square can 9. So that 1 dupo 1 9 ja 9, 9 plus 16, 1 16 just 16 divided by 6, 9 1 ja 9. Okay, sec square x equal to 9 pen 16 के count for 25, 25 by 9. Okay, sec x equal to 5 by 3 square. The square ulang diha. So square cancel for sec square or sec x equal to 5 by 3. 5 by 3 lo plus minus. Okay. Therefore sec x equal to 5 by 3 में होंगे 5 by 3 positive मा negative लो इन्हें long पे लांग देना sec x दिए third quadrant minus so here negative x light in sin x light in third quadrant प्लो दे अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट लोग नेगेटिव मत दे थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव के 10 पेन कॉटन बैग नेक्स्ट रोमन नंबर 5 cos x के cos x equal to 1 by sec x ओके 1 by minus 5 by 3 लो दे लास्ट वैल्यू लोग sec x वैल्यू के लामत दे minus 5 by 3 इनके 1 into लास्ट into लो बटे 3 by 5 उल्टा फिट पर minus के लड्डू मत दे so minus इनके multiply पर minus 3 into 1 के minus 3 by 5 plus minus भी देना cos x so therefore cos x के कपिलो positive और negative लो third quadrant लोग के cos x तो negative yeah minus 3 by 5 sin x light in third quadrant